Home Minister Amit Shah mounted a sharp attack on Mamata Banerjee's government while virtually addressing a BJP rally in Howrah. The rally was aimed at welcoming the 5 former TMC leaders who joined the BJP yesterday. Amit Shah hit out at TMC chief Mamata Banerjee, accusing her of running a government of corruption, appeasement and nepotism. In fact, Amit Shah also slammed Mamata Banerjee government for stalling the Ayushman Bharat free insurance scheme for the poor and depriving farmers of Bengal from ₹6,000 PM Kisan scheme grants. Amit Shah also attacked Didi by saying that she is unable to stop infiltration into Bengal and has the sole agenda to make her nephew the chief minister of the state. Amit Shah added that at the pace with which people are leaving the party, Mamata will be left all alone. प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका देश के 60 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा। कई लोग गरीब परिवार अपने परिवारजनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं, मगर बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिलने दे। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। हम तो चाहते थे कि उस तक 5 लाख तक की स्वास्थ्य का सुविधाएं सभी पहुंचे, उसको आपने पहुंचे नहीं दी। बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई। हमारे लाल भाई कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था और एक नारा दिया था, मां, माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने? मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त 1 मिनट तक ठहर नहीं सकता। Following here is Amit Shah stepping up his attack right after a few MLAs have quit. It seems like there are more defections in the recent past, and now he targets Mamata Banerjee, saying with the way people are leaving the TMC, eventually she'll be left all alone. Again, reiterating that several central schemes haven't really trickled down to those deserving because the state government, Mamata, hasn't allowed it. Well, yes, Amit Shah did, of course, step up his attack against the West Bengal government. He was, of course, scheduled to be in West Bengal over the weekend itself. But because of developments in Delhi vis-a-vis law and order, he has had to stay back. But he did address the rally here in Dumurjala in Howrah. Via video conference, virtually, he addressed this rally and he attacked the Mamata Banerjee government, saying Mamata needs to introspect as to why there are leaders from the TMC, from the Congress, from the left en masse switching over to the Bharatiya Janata Party. He, of course, spoke about the central schemes which have not been implemented on the ground in West Bengal. He says that, the state government has been trying to block these central schemes because eventually the people will benefit on the ground from them. And Mamata realizes that could be hampering her prospects going forward into the election. So clearly, the heat is only going up, increasing right here in West Bengal as we, of course, are in the run-up to the final days before the Election Commission announces the dates for the elections. Pallavi, thank you very much for joining us with those details. Amit Shah there rallying, in fact, steps up his attack in Howrah as he hits out at Mamata Banerjee government.
Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.